Hello students. Today's question was a patient who is a chronic smoker and presenting with retrosternal chest pain, which is squeezing type, and the pain is radiating to the left shoulder. So if you have a patient who is a male, who is more than 40 years, who is a smoker, और उसको टिपिकली रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो या तो सेंटर ऑफ द चेस्ट में या लेफ्ट साइड में, और पेन इज रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर और इवन अप टू द जॉ, then you should think of a myocardial infarction or an anginal pain unless ruled otherwise. So let's study how we will proceed to investigate this case जो आपको question पूछा गया था. First, let us understand what is acute coronary syndrome. So acute coronary syndrome comprises of conditions which are characterized by acute myocardial ischemia, which includes unstable angina, non-ST segment elevation myocardial infarction and ST segment elevation myocardial infarction. Now, what are the clinical features and other findings in various types? In unstable angina, there are three main features. First, there would be a new angina of severe onset, or there is angina at rest, or there is recent increase in frequency, duration and severity of angina. In non-ST segment elevation MI, it would be similar to unstable angina or to ST segment elevation MI. ST segment elevation MI में आपको pain would be similar to angina, but it would be more severe and more persistent and not relieved by rest or by medication, that is nitroglycerin. And there would be feeling of apprehension and sweating. दैट इज़ पेशेंट बोलेगा कि मुझे जकड़न महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है और ठंडा पसीना आता है जब भी मेरे सीने में दर्द होता है. ECG फाइंडिंग्स में आपको अनस्टेबल एंजाइना में ST डिप्रेशन या T वेव इन्वर्जन मिलेगा या नॉर्मल भी हो सकता है. इन नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI आपको ST डिप्रेशन मिलेगा या T वेव इन्वर्जन मिलेगा. ST सेगमेंट एलिवेटेड MI में आपको ECG में ST सेगमेंट एलिवेटेड मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी न्यू Q वेव्स एंड T वेव इन्वर्जन. जो बायोकेमिकल मार्कर्स हैं ऑफ मायोकार्डियल इंजरी, दे वुड नॉट बी रेज्ड इन अनस्टेबल एंजाइना, बट दे वुड बी रेज्ड इन नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI एंड ST सेगमेंट एलिवेटेड MI. नाउ दिस इज द पैथोजेनेसिस. एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक या एथेरोमा में एक अलग से वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी. अभी आप ये समझ लीजिए कि जब भी एक स्टेबल प्लाक अनस्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ रीजंस ऑफ इरोजन, अल्सर, रप्चर, then and there is superimposition of a thrombus that leads to reduction of coronary blood flow, which causes acute coronary syndrome. Now, if the ST segment elevation is absent and biochemical cardiac markers are also not elevated, then it is unstable angina. If the ST segment elevation is absent but the cardiac markers are elevated, then it is non-ST segment elevated myocardial infarction. If ST segment is also elevated and biochemical cardiac markers are also elevated in the serum, then it is ST segment elevated myocardial infarction. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिपेंड करेगा कितना इस्कीमिया है उस पेशेंट को, कितना उसके पास कोलैटरल सर्कुलेशन है, उसकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कैसी है और उस पर्टिकुलर पेशेंट के कुछ स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स पे. अर्ली रिकग्निशन ऑफ अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हमको क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज वी वांट टू इंस्टीट्यूट एन अर्ली, प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट टू द पेशेंट सो दैट वी कैन सेव हिज और हर लाइफ. क्या पैरामीटर्स हैं डायग्नोसिस के? क्लिनिकल फीचर्स, ECG एंड डिटेक्शन ऑफ बायोकेमिकल मार्कर्स विच आर रिलीज्ड इन द ब्लड ड्यू टू डैमेज टू द मायोकार्डियम. The term acute coronary syndrome was coined to distinguish between chronic stable angina from unstable angina and acute myocardial infarction. So the clinical manifestations, most important, even laymen can understand this. The pain is typically located in the center of the chest, जिसको हम कहते हैं retrosternal chest pain, or slightly on the left side of the chest. The pain is squeezing or crushing or टाइटनेस और कॉन्स्ट्रिक्शन और प्रेशर और हैवीनेस ऐसे बताएगा पेशेंट कि मुझे भारीपन लगता है या जकड़न महसूस होती है.
and the pain radiates to the left arm, to the left shoulder, to the jaw and neck. And it typically develops after exertion, after stress, or even after an emotional stress. In angina pectoris, pain is relieved by rest and nitroglycerin, but in acute MI, angina के जैसा ही pain होता है, but it is not relieved by rest and it is not relieved by taking NTG. Not readily relieved, it will take time. In MI, it is accompanied by other features like sweating, nausea, vomiting, breathlessness and palpitation. इसलिए many a times it is missed as the patient might feel कि ये मुझे acidity की वजह से हो रहा है. So these are all accompanying features. Patient बताएगा आपको मुझे ठंडा पसीना आता है जब भी मेरे सीने में दर्द होता है या मुझे उल्टी जैसा फीलिंग होता है. पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोज करने के लिए हमको सिर्फ 2 फीचर्स काफ़ी थे, सिम्टम्स ऑफ एमआई एंड द ईसीजी फाइंडिंग्स ऑफ एमआई एंड रेज्ड कार्डियक एंजाइम्स इन ब्लड. ईसीजी में जो प्रॉपर 12 लीड ईसीजी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस. द जनरल ईसीजी चेंजेस आर एसटी एलिवेशन और डिप्रेशन और डीप सिमेट्रिक टी वेव इन्वर्जन. persistent elevation of ST segment differentiate ST segment elevated MI from unstable angina and non-ST segment elevated MI. But remember, normal appearing ECG does not exclude cardiac ischemia or MI. अब revised criteria क्या है for diagnosis of MI? Any one of the following is satisfactory for diagnosis. Typical myocardial necrosis associated rise and fall of troponin or CKMB plus at least one of the following: symptoms of ischemia, pathologic Q wave on ECG, ST segment elevation or depression on ECG, coronary artery intervention, and pathologic features of acute myocardial infarction. तो ब्लड में जो नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स हैं उससे जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वो ब्लड में आते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनस्टेबल एंजाइना एंड acute myocardial infarction. So biochemical cardiac marker studies holds a very important place in diagnosis of acute myocardial infarction. So myocardial necrosis leads to membrane damage and leakage of contents into the bloodstream, which forms the basis of biochemical marker study in myocardial injury in blood. So currently myoglobin, which is an early marker, and cardiac troponin, which is a definitive marker, they are the recommended markers for diagnosis of MI. बट अगर ये ट्रोपोनिन अवेलेबल नहीं है तो हम CKMB मास एसे को भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ विल यू प्रोसीड टू स्टडी दिस केस. एन आइडियल मार्कर शुड बी हाईली सेंसिटिव, highly specific, should be able to improve patient outcome and should be cost effective. But ऐसा एक marker जो सारे criteria meet करे is not available currently. So this is the timeline of markers. Myoglobin is the first to rise. 1 से 3 घंटे में rise करता है, 6 से 9 घंटे में peak करता है और 1 दिन में वापस returns to normal. CKMB 3 to 6 hours it takes to be detected in the blood. It peaks in 12 to 24 hours and comes back to normal in 2 to 3 days. Troponin, it becomes detectable in 4 to 8 hours. It peaks in 12 to 24 hours and returns to normal in 5 to 10 days. क्या role है biochemical markers का to confirm or exclude the diagnosis of acute MI in cases of sudden onset chest pain? बट सीरियल डिटर्मिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे जब पेशेंट एडमिट हुआ तब उसके 6 घंटे के बाद, फिर 12 घंटे के बाद एंड 24 आवर्स. व्हेन वी सी दैट सीरियली इट इज़ एलिवेटिंग और इट इज़ डिक्रीजिंग, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ द लेवल्स ऑफ दीज बायोकेमिकल मार्कर्स. या फिर डिटेक्शन ऑफ ओल्ड MI बाय कार्डियक ट्रोपोनिन और डायग्नोसिस ऑफ री इन्फार्क्शन बाय CKMB मास एसे. Also to assess effectiveness of immediate reperfusion therapy, जैसे हमने जो thrombolyze किया by streptokinase or urokinase or any other. So to study the effectiveness of reperfusion therapy also we can do these markers.
and for risk stratification to determine the likelihood of acute coronary syndrome. So creatinine kinase, which is present in the striated muscle, brain, heart, we know there are 3 isomers, CKBB, CKMB and CKMM, of which CKMB is most specific for myocardial injury. The total CK and CKMB are always elevated following myocardial infarction. So following myocardial infarction, it rises within 3 to 6 hours after onset of symptoms, peaks within 12 to 24 hours and returns to normal by 48 to 72 hours. तो जो relative index होता है, that is CKMB upon total CK into 100, that is used to diagnose or distinguish cardiac from other skeletal muscle damage. तो अगर relative index 5% से ज़्यादा है, that is highly suggestive of myocardial infarction. Myoglobin बहुत जल्दी rise करने वाला marker है. It is the earliest marker currently. Myoglobin of cardiac muscle cannot be distinguished from skeletal muscle. So it is not cardiac specific. But non-elevation of myoglobin in 2 sequential samples 2 to 4 hours apart is helpful for exclusion of early MI. Troponins, cardiac troponin and troponin I, troponin T and troponin I are most sensitive and specific of the available markers of myocardial necrosis. They are considered the ideal marker for definitive diagnosis. They appear about at the same time as CKMB. So if troponins are elevated at least 12 or more hours after the onset of chest pain, their diagnostic sensitivity is 100%. Troponin I is more cardiospecific as it is found only in cardiac muscle. It is not elevated following skeletal muscle injury. Following myocardial infarction, troponin I rises 4 to 8 hours after the onset of chest pain, peaks within 12 to 24 hours and remains elevated for 7 to 10 days. So it is useful even in those patients who present late. These are the reference ranges. So this was about the biochemical cardiac markers. So this is how we study acute coronary syndrome and how we approach a patient of acute coronary syndrome. Thank you so much.